Before I start in, just wanted external confirmation whether my audio and video is clear or not. If it is clear, you can just write clear in the chat box, right? People, those are connected in the Zoom, right? Hello, hi. Fatafat bata dijiye whether my audio and video is clear, right? For the people, those who have connected on YouTube, right? I would be happy if you guys give me a confirmation, right? Fatafat bata dijiye, right? Whether my audio and video is clear or not. क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? मुस्कान कह रही है आई विल गो टू यूट्यूब एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड आई विल इंश्योर दैट द ऑडियो इज ऑडिबल. थैंक यू मुस्कान जी. रियली रियली हैप्पी मुस्कान जी. राइट, यूट्यूब की जनता का बस मैं वेट कर रहा हूँ. राइट, एक बार बस यूट्यूब की जनता का कंफर्मेशन आ जाए. राइट, आई थिंक द वीडियो इज ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एंड माई ऑडियो एंड वीडियो इज ऑल्सो क्लियर. चलो, ग्रेट. Bang on, great. Really happy to see the things which are there related to ICAI campus. The dates are out, the registrations is out, right? But the important is we don't know how to apply, what to apply, which centers are there, whether the campus is going to be physical or virtual, right? Every damn thing I'm going to be covering for this next 1 hour of a session. And in fact, this session is divided into two parts, right? The first part is understanding about the process of campus. Second part is on application of a campus form, right? So we'll not be able to complete both the things today. First, you need to understand the process of campus, which you're going to be covering today. Second part will be, of course, having a separate session on how you're going to be filling out the campus form, which is there. Okay. Now, before I start the session, right, guys, really happy for all of you guys. Congratulations on becoming a chartered accountant. It's one of the biggest milestone you have achieved in your journey. And I don't know how many years you have dreamt of becoming a CA, but this is finally a dream, which is true, right? So congratulations. And in fact, congratulations is really a small word, to be honest. But एक चीज बताऊं, right after becoming a CA, many of you might have started feeling something else. They're like, यार CA बन के यार और कुछ ही लग रहा है, right? एक रेस चालू हो गई है. People are talking about vacancies, right? विशाल जी ने तो सोचा था he'll go to Goa with someone special and will enjoy there for a few days. But I don't know what happened, right? Someone else has also started saying that यार कितनी companies में apply and what not. But nevertheless, guys, this is a journey. The competition is always there, and we are there to always guide you out. Now, this session is going to be for almost 1.5 hours or 1 hour, right? Depending on how many queries we have. But I would be really happy if you guys can carry your pen, paper, and water bottle for this session. Of course, pen, paper is important because we are going to be writing out a lot of things. We are going to be understanding how the campus process is going to be there, what all things are going to be there in a campus placements. So if you do not want to miss out anything, I'll be happy if you can note down all the things out. Chalo, let's start, right? Let's start with the very important session, and that is on ICAI Campus Placement. Okay, so let me share my screen. Okay, so first, whenever you want to go for ICAI Campus Placements, you just need to write on Google ICAI Campus Placement. The first website, if you could see it out here, is cmib.icai.org. cmib.icai.org. This is a website which is going to be your favorite website for the next 2 months or 3 months till the time you're going to be placed, right? Now, let me just go one by one, right? 3 things which Institute have issued for you guys. The first thing is the placements details for 59th campus. 59th campus is a campus which was occurred for November 23 students. You are a May 24 students. So this is a placement statistics which is there for a 59th campus. Okay. So 59th campus का ये statistics है. Campus में 6,000 students got registered out of 8,000 approximately students. 198 companies got participated. 2,900 cap offers were rolled out of which 2,205 people have accepted it. So if you have a calculator, you can calculate 2205 divided by 6888. Anyone who have a calculator, please numbers in the chat, right? Or can let us know how many people got, percentage of people got placed. The highest package was given by DIGO, right? Really happy to share one of my GR 51 batch student, Rishi, got placed here, right, in DIGO with 29 package. And average CTC, this is the average, right? I'll tell you the meaning of average median. Average CT which was offered in a previous campus was 13.12. Let me go to the next part, right? This is again a 59th campus. The institute have issued 2 details, which is there, which I'll be just explaining you. And then I'm going to be explaining you the process of how you're going to be filling out the form as well. So 2 brochures issue kiye hain. I'm going to be explaining you everything word by word because every time after the campus brochures are out, I'm going to be explaining it to you in very detailed manner. So if you feel like making some notes, if you feel like writing it down, please do it because you should not miss out any of the important updates for the same.
The first thing, this is a 68th campus which is going to be there. तो आपका जो campus placement रहेगा is going to be a 68th campus placement, right? Which you're going to be a part of it. So उसका brochure is already going to be given to you guys in your websites of institute. एक second दीजिए. Sorry, let me just share the screen. Okay. आजा भाई आजा 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 आजा. क्या करना तुम्हें? Just a second. Screen क्यों नहीं आ रही? I need to connect with the wire anyways. Sure. Screen is not coming. So just a second. Let me just connect with the wire only. Zoom भी डर गया इतने सारे सीए को एक साथ देख के. ठीक है. चलो. Nevertheless. Now it is going to be visible. Okay. I hope the screen is visible to all of you guys now. All right. Now, let me just go one by one. This is the first brochure which is issued by ICAI. Let me just explain it to you guys. First is registration for May 24 pass out candidates. It started today, right? Today it is started. And the last date for registration is 24th of July. Okay. Now let me also parallelly take one blank page and I'll be drawing some timelines which are there. So it is very important for all of you guys to please draw this timeline parallelly because I know guys, you guys are going to be messing up later and then you'll say that, sir, I did not know anything, right? So please इसको ध्यान से draw करेंगे साथ में. Okay. So today is 16th of July. 16th July को your registration is started. Okay. And this registration is going to be closed when? It is going to be closed on 24th of July. Okay. 24th of July. ध्यान से समझेंगे everything, right? Now, if you want to register for ICAI campus, do you need to pay some money? पैसा भरना पड़ता है क्या? The answer is yes. You need to pay some money, which is rupees 500. You need to pay some money, which is rupees 500 to ICAI. कैसे भरना है, क्या करना है? We'll have a separate session on this, but let us understand the process today. Now, who all are eligible? Candidates who have passed out prior to May 24, that means the candidates who cleared in November 24, but could not apply to a regular campus due to certain reasons are also eligible. मतलब क्या? ऐसा cases हो सकता है कि May 24 students are eligible. Those whose articleship is completing before 31st of October, these students are eligible. Second, November 23 students or those students, those whose results were declared after a verification on 31st of January. काफी बार होता है ना कि you're declared fail, right? So you're declared unsuccessful, then you become successful due to verification. Then also you are eligible. And third, ऐसे students, those who are November 23 students who did not sit for previous campus are eligible for a current campus. Okay, so you just let me know in the chat box, right? Are you eligible for a campus? क्या आप eligible हो campus के लिए? Eligibility check कर लिया आप सभी ने? भाई साथ साथ में check करते जाओ. Are you eligible for a campus? Are you eligible for a campus? बच्चा बोला हाँ sir, I am eligible for campus sir. बच्चा बोला हाँ sir, I am eligible for campus. Very very good. Right? I think almost every one of you will be eligible for a campus which is there. So bang on, right? Now let me again come back. Let me again come back to the detail. Now, once you are going to be applying for a campus, ध्यान से देखेंगे, you are going to be selecting one bigger center and one smaller center. मतलब क्या? Whenever I am going to be filling this registration form, in this registration form, I need to fill out two things. I need to choose two things. One is a big center and another is a small center. Okay. Now, there are 9 big centers which are there. Please understand this carefully. There are 9 big centers which are there. Out of this 9, you need to choose one. And there are multiple small centers. Out of this, you need to choose one. Okay, sir. Right? Okay, sir. अब ध्यान से देखते हैं कौन से 9 बड़े centers हैं. Okay. Let us see which all 9 big centers are there. Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Delhi, and Pune. These are the 9 big centers which are there. Small centers कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, है ना, दुर्गापुर, and you can just read out there is multiple small centers which are there. So out of this 9 bigger centers, you need to choose one center which you're going to be opting for. And out of this multiple small centers, you need to choose out one small center which you want to sit for.
Okay. Now the question is, sir, whether the interviews are going to be physical. क्या इंटरव्यूज फिजिकल है या वर्चुअल है? देखते हैं पॉइंट नंबर 23 में क्या लिखा है. इट सेज दैट इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड थ्रू फिजिकल मोड on provided venue by ICAI. Right? The interviews are going to be physical, guys. This time the interviews are not virtual. Virtual interviews nahi hai. Interviews are physical this time. Why this is there? We'll discuss it later. But ye dimag mein dal do, interviews are physical. That means, sir, so if I have my interview in Mumbai Center, I need to be there in Mumbai Center. Yes, you cannot attend it via Zoom. You need to be there physically on that center. किस लोकेशन पे होगा? I don't know. Details will be given by Institute of Chartered Accountants. Right? You'll get it out when you'll fill the form. This date, if you miss out this date, मैं फिर से बोल रहा हूँ, if you don't fill out a form on 24th, you're gone. Right? It's really difficult for you to register for the large center, which is called as a big center. Mostly, if you do not register before 24th, आप eligible नहीं रहोगे big center के लिए. Right? You'll not be eligible for a big center if you do not fill out before the date. I hope this is clear. After this is done, 24th of July के बाद क्या होगा? Right? Let me just go again in detail. ध्यान से देखते हैं. Similarly, you have a registration cutoff date as 24th. Companies के लिए the last date for registration is 30th July. Please understand demand and supply. Companies can register till 30th of July. You need to register by 24th. ये आपकी डेडलाइन नहीं है, कंपनीज की डेडलाइन है. ओके. नाउ आफ्टर दिस इज डन, व्हाट आईसीआई डज, ध्यान से सुनेंगे. बट क्वेश्चन आता है कि सर, व्हेन आई एम गोना बी रजिस्टरिंग, व्हाट ऑल थिंग्स आर गोना बी नीडेड? रजिस्ट्रेशन कैसे करना, हाउ नीड टू बी डन, एंड थिंग्स नीडेड के लिए विल हैव अ सेशन मोस्टली ऑन 18th of July. 18th of July को एक डिटेल्ड यूट्यूब सेशन रहेगा. मोस्टली इट्स गोना बी 3 to 4 or 5 PM को रहेगा. दैट टाइम यू कैन कम अगेन एंड दैट टाइम आई टेल यू हाउ टू रजिस्टर फॉर इट. बट अभी पहले प्रोसेस समझ लेते, क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट हाउ द शॉर्टलिस्टिंग इज गोना बी देयर, हाउ मच एफर्ट्स आई नीड टू पुट इन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड नाउ. ओके. यस. नाउ आफ्टर दिस इज डन, आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस, कंपनीज को आईसीआई विल शेयर द डेटा. ध्यान से सुनेंगे. ICAI students का data will share to the companies and say that, hey companies, please see who all are good candidates whom you want to hire and let us know. Who is saying this? Let us know. Institute is saying, let us know which candidates you are going to be shortlisting. So database sharing for recruiters registered on serial 1, 2, 3 will begin on 5th of August. मतलब क्या? ICAI, let me take a company called as Wipro. ICAI will share the database to Wipro on 5th of August. ये आपके लिए relevant नहीं है, but ये companies के लिए 5th of August को ICAI database share करेगा. After this is done, Wipro will select some of the candidates, saying that, oh, Shivam Palan is really nice candidate, and will update to the candidate on 9th of August, between 9th to 11th of August. Right? Online consent given by the candidates for a first round, which is this 5th, 9th to August. 5th to 7th, I don't know, ये dates अलग कभी रहती नहीं है, but this time they have done it different. Let me just also check in the updated brochure also. इस brochure में भी check कर लेते हैं ऐसा लोगों. इसमें I think यहाँ पे थोड़ा सा institute correction लाएगा. Generally ये सभी dates same होती है. Right? I'll just talk to them. But online consent given by the candidates on the first round. मतलब क्या? ध्यान से समझते हैं. कि सर, when I'll get to know कि how many companies have shortlisted me, mostly you'll get to know on 5th of August. If you are Bangalore, Chennai and Kolkata center, Ahmedabad, Hyderabad and Jaipur and Pune center, 5th और 7th August को मिल जाएगा. But if you have Mumbai and Delhi centers, you'll get to know on 9 to 11. 99% ये डेट भी चेंज हो जाएगी और ये भी 5th to 7th ही हो जाएगी. Let me again speak to someone in ICAI, but 99% ये चेंज हो जाएगी. ठीक है, देखते हैं. बट हमारे फॉर्म पे आ जाते हैं, whatever we are going to be discussing. You will get to know which all companies have shortlisted you, companies selected you. कब पता पड़ेगा सर? 5th of August. Okay, 5th of August को you'll get to know which all companies have shortlisted you. Now understand one thing, put it out in your head very clearly. दिमाग में डाल दो. ICAI campus में company shortlist the candidates. Repeat.
company shortlist the candidates. Candidates do not shortlist the company. Candidates only give a consent to a company. मतलब क्या, ध्यान से समझते हैं. Sir, I came to know that, ध्यान से सुने, I came to know that in Mumbai Center, right, ITC Limited is coming. I came to know that Vedanta is coming. I came to know that KPMG is coming. Right? I came to know that ICICI Bank is coming. I came to know that EY is coming. Sir, मेरा मन है to go into ITC Limited. I wanted to go into ITC Limited. इल्ले, तुम्हारा मन नहीं चलेगा. Companies will shortlist you based on the database which you have got from ICAI, and based on that they'll select you कि भैया whether this is a good candidate or not. So whichever companies are going to be coming to a respective center, they will choose you. They will choose you, and after they choose you, you need to give the consent to them. Now, ध्यान से सुनते हैं क्या बोला था ऐसी ब्रोशर. तो say for example, है ना? Say for example, a company called as ITC Limited have 10 vacancies. 10 vacancy है. So how many candidates ITC Limited can shortlist? They can shortlist 100 candidates. ध्यान से समझेंगे. ITC में अगर 10 वैकेंसी है तो वो 100 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकती है फॉर इंटरव्यू. कहां लिखा है देखो, shortlisting by individual recruitment entities will be restricted to maximum 10 times of a number of vacancies declared to be filled from a particular campus program center. ठीक है, from particular center. तो क्या होगा, let us understand now. Let us understand now. ITC Limited says that I'll go to Mumbai center. I'll go to Mumbai center. ठीक है. अब ICAI क्या करेगा इसके बाद? ICAI on 5th of August will give the database of all the students those who have registered for Mumbai campus, and let me assume that 5,000 students have registered for Mumbai campus. तो ICAI 5,000 students का database ITC को देगा. ITC बोलेगा कि मुझे 10 candidates hire करना है, तो ITC will shortlist 100 candidates out of this 5,000. Basic clear है सबको? I hope this is clear how the shortlisting is going to be done. अब ध्यान से सुनेंगे, ये shortlisting हुआ मतलब क्या? This is going to be visible to your portal, right? Say for example, Shivam Palan's name is there. So Shivam Palan को select किया है company called as ITC, right? ITC, KPMG, Genpact, right? Say for example, JP Morgan वैसे तो campus में नहीं आती है, right? Goldman भी campus में नहीं आएगी mostly. इन दोनों की vacancies off campus आ गई है, just for an update, ठीक है? And EY. Now understand one thing. Can multiple companies shortlist Shivam Palan? Yes, because they liked my profile. But to how many companies Shivam Palan can give consent? Shivam Palan can give a consent only to 4 companies. Shivam Palan can select only 4 companies and say that I'll be sitting for only 4 companies interview. Okay. अब ध्यान से देखते हैं. फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा because I know many of you are getting confused. क्या हुआ? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ कंपनीज का, कैंडिडेट्स का. कंपनीज के लिए लास्ट डेट 30th है, मेरे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है. ICAI डेटाबेस शेयर करेगा कंपनीज को 5th of August को. आफ्टर द डेटाबेस इज कंपनीज गेट अ डेटाबेस, कंपनीज विल सिलेक्ट शिवम पलन. Okay, companies will find out who all are good candidates, and they came to know that yeah, Shivam is really nice candidate, let's hire him. So they gave me a online shortlisting, which is Mumbai and Delhi 9th of August, which might generally change. Let me talk to someone at ICAI. ये चेंज हो जाएगा, बट ये जनरली सेम ही होता है. इफ यू डोंट बिलीव मी, आई कैन शो यू द प्रीवियस ब्रोशर. सब में सेम ही डेट्स होती हैं. ये देखो, राइट, मैं तो इतने साल से देख रहा हूँ. ये देखो, ये पिछले बार का था 7 से 9 फरवरी. आई कैन शो यू द उसके पहले का भी ब्रोशर. मेरे पास तो 50th कैंपस का भी ब्रोशर है. ठीक है, हर बार सेम ही होता है डेट्स. ये देखो 8th to 9th अगस्त, ये पुराने इसका है. ठीक है, तो डेट सेम हो जाएगा ना. आफ्टर दैट इज डन, कंपनीज को अगर एक वैकेंसी है, फॉर 1 वैकेंसी दे विल शॉर्टलिस्ट 10 कैंडिडेट्स, एंड आफ्टर दैट इज देन कैंडिडेट्स नीड टू सिलेक्ट 4 गुड कंपनीज फॉर व्हिच ही और शी इज गोना बी अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू. अब ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. कंपनीज आल्सो नीड टू डिसाइड ऑन व्हिच डेट दे आर गोना बी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. दिस आर द फिजिकल इंटरव्यू डेट्स फॉर रिस्पेक्टिव सिटीज. मुंबई में 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th, 30th, 31st. दिस आर द फिजिकल इंटरव्यू डेट्स. दिल्ली में भी ये फिजिकल इंटरव्यू डेट्स है, अहमदाबाद में ये फिजिकल इंटरव्यू डेट्स, चेन्नई में फिजिकल इंटरव्यू डेट्स. डेट्स आर क्लियर टू यू?
अब इसमें दिक्कत नहीं है, बट व्हाई आर द मल्टीपल डेट्स गिवन? प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी डेट इज सोल्ड टू अ कंपनी बेस्ड ऑन मनी. मतलब क्या? इफ अ कंपनी वांट टू हायर एट 22nd ऑफ अगस्त इन मुंबई सेंटर, इसको हम कहते हैं डे प्रीमियर. Whatever I have highlighted here on my screen, this is called as a day premier. And if company wants to hire a day premier, the company need to pay this money. मतलब क्या? अगर कंपनी को मुंबई सेंटर में हायर करना है एट अ डे प्रीमियर, मुंबई में एंड दिल्ली में द डे प्रीमियर इज 22nd ऑफ अगस्त. If company want to hire a candidate on 22nd of August on day premier, they need to give a 6 lakh rupee to ICAI. डिमांड सप्लाई समझो, 6 लाख रुपए कंपनीज आईसीआई को देगी कि भैया गिव मी डेटाबेस ऑफ कैंडिडेट. ठीक है. अच्छा, इफ यू कुड सी डिमांड एंड सप्लाई, जहां डिमांड ज्यादा वहां पैसे ज्यादा, जहां डिमांड कम वहां पैसे कम. मतलब क्या? कि कंपनीज विल ऑलवेज मूव मोर टुवर्ड्स मुंबई एंड दिल्ली. दैट इज व्हाई आईसीआई इज चार्जिंग हायर प्रीमियम. Everyone knows that if companies are coming to Ahmedabad, Hyderabad, Jaipur and Pune, they are charging lower premium. जैसे 2 लाख रुपए में आप डे प्रीमियर में हायर कर लेना, बट इफ यू वांट टू हायर इन मुंबई एंड दिल्ली, यू नीड अ 6 लाख रुपए. राइट, आपको 6 लाख रुपए देना पड़ेगा. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. सो द डे प्रीमियर इज 22nd ऑफ अगस्त फॉर मुंबई. दिल्ली के लिए 22nd अगस्त इज फॉर दिल्ली. अहमदाबाद के लिए 24th. अब अहमदाबाद में अगर कंपनीज वांट टू हायर on day premier, they need to pay 2 lakh rupees. If they want to hire in Bangalore, Chennai and Calcutta for a day premier, right, they need to pay 4 lakh rupees. This is what the quotation which is given by ICAI. Now, one more very important thing, ध्यान से देखें. If company want to hire in Mumbai and Delhi campus on a first day, मतलब क्या? अगर कंपनीज को 22nd of August को हायर करना है, ये अच्छी चीज की है आपके लिए. They need to give a minimum CTC of 20 lakh rupees. They need to give a minimum CTC of 20 lakh rupees, or they need to give a minimum 15 vacancies, or 50, they need to hire minimum 15 candidates, and they need to give a minimum CTC of 17 lakh. मतलब ध्यान से सुने, अगर आपको डे प्रीमियर की कंपनी शॉर्टलिस्ट की तो समझ जाना 17 लाख तो मिलने वाले हैं, बट 17 लाख इज अ सीटीसी. सीटीसी एक धोखा है. Please understand. CTC में lot of other components are included like gratuity, right? Like variable bonus, ESOPs. So you always need to see what is a fixed salary you're going to be getting in your bank account. CTC के चक्कर में मत पड़ना. सबसे पहले चेक करना फिक्स सैलरी कितनी है. मतलब क्या? Let me again revise. If a company want to come on 22nd of August in Mumbai campus, which is called as a day premier, they will be paying 6 lakh rupees to ICAI, which is not relevant for me, but they will be offering me a minimum CTC of 20 lakh if there is a less than 15 vacancies. If there is more than 15 vacancies, they can offer a CTC of 17 lakh. मतलब क्या? अगर कंपनी डे वन पे आ रही है इन मुंबई सेंटर, अगर कंपनी डे वन पे आ रही है मुंबई सेंटर पे, डे वन इज 23rd of August, the company need to pay 4 lakh rupees to ICAI, and they are gonna be offering a minimum CTC of 14 lakh, and they need to hire a minimum candidate, or they need to hire a minimum candidate with a package of 12 lakh. I hope this is clear to you. I hope this is basic is clear to you. Why it is important? It is important for you because whenever you are going to be giving a consent to a company, you also need to see, hey, what is the CTC offered? Understand one thing. Many of you have done the CA because one of the reason is you wanted to earn a good money. Don't give me this weird look. I know the truth. Right? तो पैसा important है. Sir, सवाल ये आता है, what is the minimum CTC which is going to be offered by a company? If a company is hiring for a day 5, recruiter need to pay at least a CTC of 9 lakh rupees. कम से कम 9 लाख तो देना ही पड़ेगा. The minimum CTC which is going to be offered to a CA fresher is 9 lakh rupees. But this is a CTC. Right? So this is for a bigger center. अब ध्यान से समझते फिर से. Let me again come to the brochure. ठीक है. Now, sir, मतलब क्या? I got a shortlisting on 5th of August saying that the companies have shortlisted me. How many companies can shortlist me? Depending on number of companies coming to the campus and depending on my profile. Okay.
Now imagine that 10 companies have shortlisted me, or let me take simple example, 6 companies have shortlisted me. Let me name the company called as ICICI Bank, EY, Genpact, right? Vedanta, KPMG, right? And Oracle, right? ये सब companies have shortlisted me. All these are the companies which have shortlisted me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now ध्यान से देखेंगे, ये अगर ध्यान से नहीं समझे तो गया. Out of this, you need to give a consent to 4 companies. इसमें से आपको 4 companies को consent देना है, which is a total of the first shortlisting plus second shortlisting. 4 कंपनीज को कंसेंट देना है, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग प्लस सेकंड शॉर्टलिस्टिंग. तो द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग इज ऑन 5th of August, राइट? दिस इज द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग. एक समझो, मैं अच्छे से लिखता हूं. आई होप यू आर ड्राइंग दिस पैरेलली. दिस इज द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग. व्हेन आई एम गोना बी गेटिंग अ सेकंड शॉर्टलिस्टिंग, गाइस ध्यान से देखेंगे, व्हेन आई एम गेटिंग अ सेकंड शॉर्टलिस्टिंग, the second shortlisting is going to be done by company on 13th and 14th of August. 15 अगस्त को चाहे कुछ भी हो जाए, I don't know, you must be busy somewhere, but I don't care. You will be getting a shortlisting on 15th of August and you will need to give a consent. You need to give a consent to a company on 15th of August for a second shortlisting. So second shortlisting कब आएगी आपको? Second shortlisting you are going to be getting on 15th of August. Right? 15th of August you will get a second shortlisting. Now, how many consent you can give? ध्यान से देखेंगे. The first shortlisting plus second shortlisting, if I total this two, you can give a total consent to 4 companies. Total आप 4 companies को consent दे सकते हैं. Now, let me explain you in very detailed manner. यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हो आप लोग. Please understand this very carefully. Attention level 100% now. Sir, in first shortlisting, I got EY, ICICI Bank, Genpact, Vedanta, KPMG, and Oracle. इसमें से if I give a shortlisting and a consent to EY, Genpact and Vedanta, okay? EY, Genpact and Vedanta, मैंने 3 को consent दिया. तो how many companies I can give a consent on second shortlisting? 1. Simple. अगर यहाँ पे 4 दे दिया तो second के लिए 0. If you give 3 here, you can give 1. If you give 2, you can give 2. If you get 3, you can give, if you get 1, you can give 3 here. If you give 0, you can give 4 here. Sir, I have a doubt. If I give a consent to EY, Genpact and Vedanta in a first shortlisting, and if I don't get any of the company in a second shortlisting, तो क्या होगा? मोए मोए. ठीक है? Sir, मान लो, if I give a consent to these 3 companies in a first shortlisting, will ICICI Bank, KPMG and Oracle will select me in a second shortlisting? The answer is no. एक बार किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा नहीं आता या आती. Right? In a similar way, if you have rejected this company, they'll say that यार ये तो मेरे को आना ही नहीं चाहता मेरे पास, तो they will not shortlist you in a second shortlisting. Sir, but I don't know which companies will shortlist me in second shortlisting. That is the problem. So you need to take a bold decision and decide how many companies you will select on a first shortlisting. आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 3 करूं, 4 करूं, 1 करूं, 0 करूं, कितनी करूं. You need to decide on this. ये कब होगा? When you'll get the entire list of companies coming to your center and then you need to decide. Now let me take another permutation combination. Sir, if I don't give a consent in a first shortlisting only, मैंने एक भी companies choose नहीं की, मैंने बोला कि I'll wait for second round. तो second round में you can give a consent to 4 companies, but in second round you got Axis Bank and you got, say for example, है ना, एक और कंपनी ले लेते हैं, which is Wipro. सिर्फ 2 ही कंपनी आई, तो मैं कितनी कंपनीज को कंसेंट दे सकता हूँ? Only 2, because you have only 2 companies. Either you are eligible for 4, but you don't have 4 in your list, right? Sir, but पुरानी वाली, it's gone. Because you have not given a consent to the old one, it's gone. Right? So it is a permutation and combination, and total consent you need to give to 4 companies, including first shortlisting and second shortlisting. I hope this is clear to all of you guys. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, but अगर ये नहीं समझा तो I'll be happy to repeat it again. I'll be happy to repeat it again for the people, those who are watching on YouTube and Zoom. Right? एक बार बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर क्लियर ऑल क्लियर. क्लियर क्लियर ऑल क्लियर. सबसे पहले फर्स्ट में देना है, फिर सेकंड में देना है,
यूट्यूब की जनता, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, राइट? यूट्यूब की जनता, आई एम वेटिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू गाइस। बता दो यार, बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आई रिपीट इट अगेन, राइट? रिपीट, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं ऑल क्लियर। ओके जी, आई रिपीट इट सो दैट द पीपल दोज हु हैव मिस्ड आउट कैन अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। दोज हैव अंडरस्टूड इट, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो फिर से एक और एग्जांपल लूंगा। देखो गाइस, यू हैव फॉर अ बिगर सेंटर you have two shortlisting. Okay, first shortlisting, second shortlisting. फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग आपको आएगी 5th ऑफ अगस्त को, सेकंड शॉर्टलिस्टिंग आएगी 15th ऑफ अगस्त को। ठीक है, वेदांता को 10 कैंडिडेट्स हायर करने थे, दे विल शॉर्टलिस्ट 100 कैंडिडेट्स। ये हमको क्लियर है। बट टोटल कंसेंट आई कैन गिव टू 4 कंपनीज व्हिच आर देयर इन फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग। यू गॉट से फॉर एग्जांपल 5 कंपनीज। You got Vedanta, you got KPMG, you got EY, you got Deloitte, and you got Genpact. Out of this, you can give a maximum consent to how many companies? 4 companies. So you decided, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले 3 को दूंगा, I'll give Vedanta, KPMG, and EY, and you left 1 slot for second shortlisting. ठीक है, तो टोटल का for first shortlisting and second shortlisting, this total should be 4. Okay, and but it is very dependent on the first shortlisting. क्या फर्स्ट में कितना यूज कर रहे हो? तो इफ यू यूज 3 consent on first shortlisting, you're left with 1. If you use 0, you're left with 4. If you use 1, you're left with 3. Right? If you use 2, you're left with 2. तो मैंने अभी कितने यूज कर लिया था? आई हैव गिवन अ कंसेंट टू 3 कंपनीज। एंड सेकंड शॉर्टलिस्टिंग पॉसिबल हो सकता है कि मेरे को एक भी कंपनी ना आए, तो मैं 3 ही कंपनीज के इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग में 3 को ही कंसेंट दिया। ओ सर, तो मतलब सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग में कंपनीज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट ऐसा नहीं होता है, जनरली सबको 1-2 कंपनीज आ जाती है। ठीक है, तो सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग में इमेजिन दैट यू गेट 10 कंपनीज नाउ। 10 कंपनी आ गई, विप्रो, केपीएमजी, डेलॉयट, सब आ गई आपको, पीडब्ल्यूसी, एचडीसी, whichever company you're thinking of, or you got all the companies. कितने को कंसेंट दे पाओगे? ओनली 1. Why? Because you have given a consent to 3 companies. Simple. I hope this is clear to all of you guys. The total you need to give a consent to 4 companies. Okay, done. ये क्लियर है? Now let me again come to the 60th campus brochure. इस पे आ जाते हैं। अब कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? फॉर कंपनीज नाउ दिस टाइम इट इज अ फिजिकल कैंपस। दिस टाइम इट इज अ फिजिकल कैंपस। अभी तक के वर्चुअल कैंपस होता था, चीजें अलग थी। फिजिकल कैंपस में चीजें अलग रहेगी। यू नो व्हाई? से फॉर एग्जांपल इफ कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, तो हायर प्रोबेबिलिटी है अ कंपनी दोज हु आर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई विल ओनली कम टू मुंबई, बिकॉज ट्रैवल कॉस्ट, अकोमोडेशन कॉस्ट सब लगेगा कि नहीं लगेगा कंपनी को? 6 लाख रुपए तो आईसीआई को दे रहे हैं। हेलो, उसके अलावा खाना पीना रहना, सॉरी पीना नहीं, हाँ खाना रहना, राइट, ये सब लगेगा एम्प्लॉयज का। तो मुंबई के रहेंगे तो इट्स गोना बी चीपर। तो ये एक चीज मैंने नोटिस किया था, एंड लकीली मेरे अटेम्प्ट के बाद इन 2019 के बाद फिजिकल कैंपस बंद हो गया बिकॉज द कोविड वाज देयर। आई वाज लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल कैंपस एंड आई नो व्हाट ऑल थिंग्स हैपन इन द फिजिकल कैंपस। फिजिकल कैंपस का एक एडवांटेज ये है कि वॉक इन ड्राइव्स बहुत होते हैं। हेलो, वॉक इन ड्राइव्स बहुत होंगे। इवन इफ यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर से फॉर एग्जांपल केपीएमजी, केपीएमजी का आज आपको सुबह मेल आएगा, वी हैव अ वॉक इन ड्राइव फॉर स्टूडेंट्स दोस हु डू नॉट गेट शॉर्टलिस्टिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम। तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है फिजिकल कैंपस में टू गेट प्लेस। दैट इज नॉट देयर इन अ वर्चुअल ड्राइव। व्हाई? वर्चुअल में क्या है, एचआर फ्री बैठा है, अब कहां से ढूंढेगा लोगों को? फिजिकल में आप एचआर के सामने खड़े हो, एचआर को आपने पकड़ लिया, मैम आई एम फ्री, प्लीज मैम प्लीज चेक माय रेज्यूमे, आई एम रियली इंटरेस्टेड फॉर वेदांता, रियली इंटरेस्टेड फॉर केपीएमजी, दिस इज, आजा, मैं खाली बैठा हूँ, आजा, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज, राइट? एंड इनफैक्ट last time the career ascent program was happened for experienced chartered accountant few days back, and luckily I was a part of I went to this Bangalore career ascent program which was there with the startup sphere. तो वहां पे भी मैंने देखा था कि lot of companies were really happy and candidates were getting offer फटाफट। तो एक थोड़ा सा एज मिल जाता है फिजिकल कैंपस में, राइट? ये वर्चुअल में नहीं होता है। तो दैट इज दैट। लेट मी अगेन कम बैक। तो कंपनीज विल डिसाइड अ डेट एंड अकॉर्डिंगली दे विल पे एंड अकॉर्डिंगली दे आर गोना बी हायरिंग यू। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं।
सीटीसी मैंने डिस्कस कर लिया, मिनिमम सीटीसी कितनी रहेगी. After this is done, after my second shortlisting is done, what is going to be happening? Now understand one thing. Few companies will be conducting your written test. मैं अभी से ही बता देता हूँ. L&T written test होगा, Reliance written test होगा, Vedanta group discussion होगा, Hero MotoCorp group discussion होगा, right? Wipro written test 100%. Right? ये पैटर्न है सभी कंपनीज का. So they are going to be conducting your tests, which is mostly going to be, अब यहाँ से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा, which is going to be from 17th to 19th of 17th of 19th to August. 17 to 19th August के बीच में this companies will start conducting your tests. Okay. After this is done, whichever date you have an interview for, and whichever center you have selected, and you will be going for an interview. So say for example, you opted for a Mumbai center, 22nd of August ko interviews will start. So depending on date, so let me say 22nd August onwards, your interviews will start. Okay. So if you see how much time you have, today is 16, 22nd August तक के आपके पास time है to prepare well. That is first. But does that mean that I am only going to be sitting and waiting for ICAI campus? It's your choice. But I generally say that parallelly, it's your responsibility to prepare well. And once you're prepared, start on applying to the companies off campus also. Right? Off campus भी apply करना चालू करें. देखो इंस्टीट्यूट अपने साइड से बहुत सही करता है, जितना हो सकता है वो बेस्ट ही करता है, मैं सच बता रहा हूँ. बट दिक्कत क्या होती है, राइट? मैं एक सच बता रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी विल बी हैप्पी टू हियर दिस आउट. इन आईआईएम्स प्लेसमेंट इज नॉट टेकन केयर बाय आईआईएम्स. पता है आपको? प्लेसमेंट इज टेकन केयर बाय द कमिटी ऑफ द पीपल दोज हु आर स्टूडेंट्स इन आईआईएम. एक प्लेसकॉम कमिटी होती है जो बच्चा ही रन करता है. यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट आपके लिए वो कर रहा है. ठीक है? Yes, this is a fact. You talk to any of the IIM guy, this is that student is driving the placement committee. IIM is not a placement agency. It's a training institute. Institute आपके लिए additionally placement भी करवा रहा है, तो you are lucky enough. But ठीक है, let's not go there. What I'm trying to tell you out is, parallelly, you should also start preparing well and keep on applying off campus. That is first. ठीक है, अब चलो ये ब्रोशर को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है, CTC I have explained you. Now let us come to the small center. जैसा big center है वैसा small center है. But who is eligible for a small center? Who is eligible for a small center? A people those who do not get placed in a big center. अगर आपका वैकेंसीज इन सेंटर्स में जाने के बाद भी नहीं हुआ, हो सकता है ना. Sir, I said for a Pune center, I did not got placed. I said for a Delhi center, I did not got placed. Then you are eligible for a small center. तब आप एलिजिबल हो स्मॉल सेंटर के लिए. सेम डेट्स सेम टाइम्स. अब देखो टाइम कैसा चलेगा इसमें. लेट मी अगेन डिस्कस इट आउट. राइट, लेट मी डिस्कस द टाइमलाइन फॉर अ स्मॉल सेंटर नाउ. अब स्मॉल सेंटर के लिए कंपनीज रजिस्ट्रेशन कर सकती है 10th of September तक. आपका शॉर्टलिस्टिंग कंपनी विल डू ऑन 17 and 18th. You will be able to see on your portal on 19th of September whether you are eligible for small center or not. How many consent you can give to the small center? First and second का मिला के you can give a consent to 4 companies. Same rule, right? ये कब होगा? जब आपको इधर जॉब नहीं मिली. You did not got a job in big centers. Then you are eligible for small center. The time you give us selection, जैसे आप select हो जाओगे पोर्टल में, you need to give a consent that you are selected. आपका पोर्टल हो जाएगा ब्लॉक. ICAI बोलेगा thank you, really happy that you got placed. ठीक है? You need to give a consent on 21st and then your interview dates कहाँ से चालू होंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. You can see this out. Interview dates for Raipur, Bhopal, Ernakulam, Ranchi, 23rd and 24th. बाकी centers में 24th, 25th and Bhubaneswar and other centers में this are the date. तो ये काफी late है. अभी हमारे लिए relevant है ये. Right? This is something which is relevant for you. Now I know a lot of people have one common question in their mind. Which center I should choose? Which center I can choose? सर कौन सा सेंटर चूज करो? दिल्ली चूज करो, मुंबई चूज करो, बैंगलोर चूज करो, या ज्यादा जॉब जहां आती है वहां चूज करो? इस पे हम डिटेल डिस्कशन लेंगे. बट दिस टाइम इट इज अ फिजिकल कैंपस. तो से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट अ जॉब इन मुंबई, you choose a Mumbai center. If you want a job in Delhi, you choose a Delhi center. If you want a job in Ahmedabad, you choose a Ahmedabad center. जिस शहर में जॉब चाहिए वो शहर का आप कैंपस चूज करेंगे. मोस्टली दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज फिजिकल कैंपस है ना.
तो मोस्टली अहमदाबाद की कंपनीज ही अहमदाबाद में ज्यादा आएगी. आई बी गेटिंग इट. दैट इज देयर. Does that mean that if a company is coming to Ahmedabad, it is going to be giving a vacancy in Ahmedabad only? No. ये कहीं नहीं लिखा है. लास्ट टाइम मैं बता रहा हूं मेरा केस. इन May 2019 आई सिलेक्टेड अ मुंबई कैंपस. ठीक है, मैंने मुंबई कैंपस सिलेक्ट किया था. आई गॉट प्लेस्ड इन उड़ान. मेरे को जॉब कहाँ मिली बताओ? बैंगलोर में. क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है. राइट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट हियर इज कि दिस इज गोना बी पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि मुंबई की कंपनी है तो मुंबई में ही जॉब मिलेगी. कंपनीज कैन ऑफर यू जॉब इन डिफरेंट सिटीज. इट इज 50-50. मतलब 50% वो कंपनीज आएगी जो मुंबई में जॉब देगी, 50% वो कंपनीज आएगी विच माइट गिव अ जॉब इन अदर सिटीज एज वेल. राइट सर. बट सिलेक्ट कैसे करें, इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन लेंगे और सेशन लेंगे. राइट, इन अपकमिंग डेज. आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, विच सेंटर टू चूज, हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म एंड हाउ यू आर गोना बी डूइंग द थिंग्स. ठीक है. अभी तक के द बेसिक स्टफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम गोना बी कमिंग व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज हैव कम इन द पास्ट टिल नाउ. राइट, अभी तक की बेसिक चीजें वट एवर आई हैव टोल्ड यू इज क्लियर. इन द चैट प्लीज. क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर. बता दीजिए चैट पे, क्या बेसिक चीजें क्लियर हो गई सभी को? यूट्यूब की जनता यार, आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम इतने मेहनत से आपके लिए सेशन दे रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, हमें भी अच्छा लगेगा. राइट, लाइक कर दीजिए प्लीज. ओके. कुछ डाउट्स है तो मैं लेता हूँ यूट्यूब से, बिकॉज यूट्यूब में अभी डाउट्स थोड़े आ रहे हैं. सर, वेदर फोर कैटेगरीज, फोर चॉइसेस एग्रीगेट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल? नहीं बेटा, स्मॉल कैंपस एकदम अलग है, लार्ज कैंपस अलग है. तो टोटल 8 मिलेंगे. बट स्मॉल इज वेरी लेट, लार्ज इज अर्लियर, बिगर कैंपस इज अर्लियर. तो बोथ आर डिफरेंट. 3+1 परम्यूटेशन इज गुड बेटा. इट इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन विच कंपनीज आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करना. सर, वेदर फोर चॉइसेस, आई हैव कवर्ड दिस आउट. और कोई डाउट्स है तो एक बार यूट्यूब पे डाल दीजिए. यूट्यूब की जनता, मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ. कोई कह रहा है क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर. वेरी वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. हाँ. अच्छा बेटा, समवन इज आस्किंग व्हाट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अ स्मॉल कैंपस. देखो बेटा, व्हेन यू विल अप्लाई फॉर अ लार्जर कैंपस, व्हेन यू विल अप्लाई फॉर कैंपस, ऑटोमेटिकली आप स्मॉल कैंपस के लिए अप्लाई कर दोगे, बिकॉज वहां पे स्मॉल कैंपस का सेंटर भी आपको चूज करना होता है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. जब आप बिग सेंटर को फॉर्म फिल करोगे, अभी जो हम लोग करेंगे डे आफ्टर टुमारो, राइट, ऑन 18th. तो जैसे ही यू आर गोना बी फिलिंग आउट अ फॉर्म ऑन 18th, या जब भी आप फिल करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल आल्सो नीड टू अप्लाई फॉर अ स्मॉल सेंटर. तो अलग से अप्लाई नहीं करना है. ठीक है. Someone is saying that, sir, if I did not clear my SPOM, either I am eligible for campus. ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है अभी तक कि यू आर एलिजिबल फॉर कैंपस. राइट. आई थिंक आई हैव आल्सो सीन फ्यू पीपल हु डिड नॉट क्लियर एसपीओएम, दे आल्सो गॉट अ मेंबरशिप आल्सो. ठीक है, ऐसा मैंने कुछ देखा है एक दो बच्चों का, बट दैट इज आल्सो देयर. सेकंड, सर, आई डू नॉट हैव अ मेंबरशिप, कैन आई अप्लाई फॉर कैंपस प्लेसमेंट? द आंसर इज यस. इस पे आ जाते हैं एक कॉमन क्वेरीज. सर, अगर मेरा मेंबरशिप नहीं है तो क्या मैं कैंपस के लिए बैठ सकता हूँ? द आंसर इज यस. If you don't have a membership, you can sit for campus as well. But I would recommend you to please get your membership as soon as possible and take the advantage and be proud of a community and start using C after you take a membership. ठीक है, अब देखो कहाँ लिखा है. Please obtain the ICAI membership immediately after becoming a CA final. But quote the membership number if you have. Otherwise, you need to sign a declaration saying that undertaking that you will take a membership for. है ना, आप ले लोगे, declaration देना पड़ेगा. देन जिसका एमसीएस बचा है, दोज हुज एमसीएस इज लेफ्ट, कुछ ऐसे बच्चे बहुत पुराने वाले, दोज हुज एमसीएस एंड आईटीटी और समथिंग इज लेफ्ट, you also need to put your certificate number when you're going to be filling out form, and you need to ensure that that is filled before 12th of August. ये 12 अगस्त के पहले आपको कोई भी बैच के लिए रजिस्टर करना है, and you need to put the number which is there. Okay. Then maximum बता रहा था, maximum 4 organizations of your choice out of the organization that are shortlisted by you and gave consent for attending those interviews on a specified aggregate days for a bigger center. मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया. Similarly, the 4 का is gonna be there. Then, in the event of not joining a company after signing a declaration, अच्छा, बहुत बढ़िया चीज. Say for example, ध्यान से सुनेंगे, you got placed into company which was an interview for 22nd of August. 22 अगस्त को इंटरव्यू हुआ, you got selected, you are a smart kid. बट देन यू से दैट इल्ले आई विल नॉट जॉइन दिस कंपनी. तो क्या होगा, 22nd को जैसे आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, कंपनीज विल आस्क यू टू साइन अ डिक्लेरेशन सेइंग दैट आई विल जॉइन दिस कंपनी. एक डिक्लेरेशन साइन करवाएंगे. आफ्टर यू साइन दिस डिक्लेरेशन, दो चीजें होंगी. नंबर 1,
your portal access for ICAI campus will be gone. Second, very important, if you say that I will not join this company, you need to pay a penalty of 5,000 rupees. मैंने नहीं बोला है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? ये होता भी है, और इस बार तो फिजिकल कैंपस है तो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है. यू नीड टू कैंडिडेट हैव टू पे अ राइट commitment charges of 5,000 rupees, and such behavior will be viewed seriously as it blocks opportunity for other candidates and plan to companies. ठीक है, तो 5,000 रुपए भरना पड़ेगा if you don't join that company. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखेंगे, इस नंबर को फोन में सेव करने. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ICAI campus, you are supposed to require to reach out to this number. दो numbers है, and you can also write down any of the mail on this email ID cajobs@icai.in, right? इन दो numbers पे और इस email ID पे आपको रीच आउट करना है. नालायक को सीए मॉन्ग का सपोर्ट नंबर ICAI कैंपस की क्वेरी नहीं सॉल्व करेगा, है ना? पिछले बार कुछ नालायकों ने हमको कॉल करके पूछ रहे, सर सर ये फॉर्म फिल नहीं हो रहा, क्या करूं? अरे हमको क्या पता भाई, मतलब हमको पता है बट हमारी सपोर्ट टीम यार, समझो यार, मतलब ठीक है, ठीक है, आप ICAI क्वेरीज पे पूछो, राइट, विच इज देयर, राइट, विच इज 9 AM to 6 PM, राइट, 9:30 AM to 6 PM. आप इस पे कॉल करिए और मेल करिए, ठीक है. नेक्स्ट, ये भी डन, ये भी डन. नेक्स्ट आता हूं, मैं कुछ अच्छी चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ. दिस इज देयर 50th कैंपस का ब्रोशर मैं ओपन करके एक चीज दिखाना चाहता हूँ. ICAI have given the statistics of companies which are hiring top 10 companies organization in terms of job opportunities offered in campus placement from 2017 to 2022. ICAI कहता है there are few companies which are aggressively hiring in campus placements. बट सवाल है कौन सी कंपनीज, ठीक है, ध्यान से देखते हैं. I'll divide it into category, ठीक है. बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज. देन यू हैव बिग फोर्स, बिग फोर्स, बिग फोर्स, ठीक है. देन यू हैव IT कंपनीज. ये तीन मेजर कैटेगरी आपको दिखेगी हायरिंग में, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज, बिग फोर्स एंड देन यू हैव IT कंपनीज. IT कंपनीज में अगर आप देख पा रहे हो, जेनपैक्ट, TCS, एक्सेंचर और इन्फोसिस सबसे ज्यादा हायरिंग करती है कैंपस में. बैंकिंग कंपनी में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक इज आल्सो देयर, अभी एक्सिस भी ऐड हो गई है. PWC डिवाइडेड इनटू टू, PWC इंडिया एंड PWC SDC, राइट, SDC व्हिच इज देयर, ठीक है, तो दैट इज आल्सो देयर. BSRS, KPMG, SRBs, EY, Deloitte, सबको पता है. तो ये टाइप की कंपनी ज्यादा हायर करेंगी. ICAI बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट. सेकंड, विच ऑल कंपनीज विल गिव यू अ हायर CTC. आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज ने क्या क्या CTC ऑफर की थी. तो इफ यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लीजिएगा, आपको कभी कहीं पे काम आ जाएगा. और someone is targeting some good companies, so this were the good companies which came to the campus which offered a higher CTC, which is there. ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ डी शॉ का 32 लाख का पैकेज है, सच में है यार, मैं ऐसा हवाबाजी नहीं करता हूँ. द बेस्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर इज वी हैव स्टूडेंट्स इन ऑल दिस कंपनीज, ठीक है, तो दैट इज देयर. ओके, चलो अब एक और चीज दिखाता हूँ. ये तो ICAI का डेटा हुआ. मैं भी डेटा थोड़ा सा ऐसा बनाते रहता हूँ आजकल, एंड माय हॉबी इज टू इंश्योर दैट कि आई कैन शोकेस सम गुड थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स. ये लास्ट कैंपस का एनालिसिस मैंने किया था, हाईएस्ट, मतलब लास्ट वाज आई थिंक May 23 का था ये. नवंबर का आई एम येट टू डू. हाईएस्ट इज दिस, लोएस्ट इज दिस, मीडियन इज दिस. मीडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज अलग होता है, मीडियन अलग होता है. आई होप यू नो दैट. अगर मैं बोलूं 3 कैंडिडेट्स प्लेस हुए हैं, एक कैंडिडेट का सैलरी है 8 लाख रुपीज, सेकेंड कैंडिडेट का सैलरी है 12 लाख रुपीज, थर्ड कैंडिडेट का सैलरी है 25 लाख रुपीज. अच्छा, इसका मीडियन क्या होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस? अरे मीडियन बता सकता है कोई? मीडियन क्या होगा इसका? हेलो, चैट पे बताएंगे मीडियन क्या होगा इसका. व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस? 8, 12 एंड 25. मीडियन क्या होगा इसका? मीडियन, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, राइट. बच्चे ने बोला मीडियन होगा 12. अच्छा, इसका एवरेज कोई बताएगा कितना होगा एवरेज? व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस? एवरेज, बच्चा कह रहे एवरेज सैलरी इज 15 लाख, मीडियन सैलरी इज 12 लाख.
राइट। आप कहीं पे भी देखोगे, राइट, कहीं पे भी देखोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, राइट। आप कहीं पे भी देखोगे आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो क्या मिलेगी मैं बताता हूँ आपको। वो क्या मिलेगी मैं बताता हूँ आपको। आपको मिलेगा हमेशा एक जो सैलरी विच इज देयर ना, मैं अभी दिखाता हूँ, ये भी दिखा रहा था आपको, सॉरी। ये देखो क्या मिलेगा, एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी मिलेगा, मीडियन सैलरी नहीं मिलेगा। मीडियन सैलरी विल गिव यू राइट पिक्चर, एवरेज सैलरी विल नेवर गिव यू राइट पिक्चर। ठीक है, तो दैट इज देयर। ओके, अब मैं बात करता हूँ कंपनी वाइज। दिस इज अ प्रीवियस कैंपस का है, तो देख लेते हैं, सेम अंडरस्टैंडिंग रहेगा। पीडब्ल्यूसी come with a package of 10 lakh, number of vacancy, global firm 1000, package 10 lakh। if you could see, मैं अगर फिर से हाईलाइट करता हूँ, बिग फोर्स, ग्लोबल फर्म्स, राइट, ये बैंक हो गए आपके, राइट, ये बैंक हो गए, राइट। देन यू हैव बिग फोर हियर, यू कुड सी बिग फोर, बिग फोर, राइट। ये इंडस्ट्री हो गई, राइट, सॉरी ये तो आईटी कंपनी में गिनता हूँ इसको। इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, इंडल को इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई। तो अगर आप देखेंगे तो मेजरली इन सब कंपनीज का अगर मैं टोटल वैकेंसी भी लेता हूँ तो 10,000 अगर वैकेंसी होगी, तो इसमें से ही 6,000 वैकेंसीज तो इन्हीं लोग डाल रहे हैं, सिर्फ इतनी कंपनी, सिर्फ गुड सी। सुरेश सुराना इज अगेन आरएसएन, दिस इज अ पार्ट ऑफ अगेन टॉप 6 फॉर्म। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट, अगर आपको अच्छी वैकेंसीज चाहिए, अच्छी कंपनी में जाना है, तो ऑफकोर्स दैट रिक्वायर्स अ गुड शॉर्टलिस्टिंग, गुड रेफरेंसेस। इन्हीं कंपनीज का मैं टोटल ले लेता हूँ कैंपस में, तो मेजरली यही कंपनीज आएगी, राइट, फॉर मोस्ट ऑफ यू। बट इफ यू वांट अ सीटीसी विद हायर कंपनीज, अगर सेम चीज बात करता हूँ, ऐसी कंपनीज जो हायर सीटीसी देगी, तोलाराम कितनी सीटीसी, 49 लाख, वैकेंसी ओनली 12। आईटीसी 23 लाख पैकेज, ओनली वैकेंसी 22। एक्सेंचर इंडिया कंसल्टिंग, आईटी कंसल्टिंग 20 लाख सीटीसी, 30 वैकेंसीज ओनली, राइट। बीपीसीएल, बीपीसीएल कहेंगे, हाँ बीपीसीएल, कितनी वैकेंसी, ओनली 15 वैकेंसीज, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट, जहाँ वैकेंसी पैकेज ज्यादा है वहाँ वैकेंसीज कम है, जहाँ पैकेज एवरेज है वहाँ वैकेंसीज ऑफकोर्स ज्यादा रहेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अच्छा अब इसमें कंपनीज को 12 वैकेंसीज है, कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगी, 120। हेलो, if you get this type of companies or shortlisting, right, even if you get some good companies out, your name should be there, guys. I hope you're getting what I'm trying to say. ऐसा बिकॉज देखो इसमें भी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/10 है। हेलो, आईटीसी में अगर 220 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, 220 में से 22 ही सिलेक्ट करेंगे, दैट मींस माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज 1/10, बेसिक मैथमेटिक्स। बट व्हाट आई वांट यू टू बी देयर इज, आई वांट यू टू बी देयर इन दैट वन। एंड फॉर दैट गाइस, अभी से यू नीड टू प्रिपेयर वेल, राइट। आपका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू गेट इनटू गुड कंपनीज, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी कंपटीशन, पीपल वांटेड अ गुड जॉब ऑफर, राइट। ऐसा नहीं है जॉब किसी को नहीं मिलेगी, जॉब सबको मिलेगी, बट आपके एफर्ट्स, आपका इंटरव्यूज विल डिफाइन योर सक्सेस। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, ये फैक्ट है, राइट। तो फॉर दैट यू रियली रियली नीड टू वर्क हार्ड, ओके, राइट। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, जस्ट आई एम मेकिंग यू अवेयर सो दैट यू लेटर ऑन शुड नॉट से दैट यार किसी ने बताया नहीं, बताया था तुमने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो डोंट लीव योर इंटरव्यूज टू चांस, और डोंट लीव योर थिंग्स टू अदर थिंग्स आउट, ओके। हाँ सर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को कैंपस में भी जॉब मिलती है, आंसर इज यस, राइट। गाइस स्पैम ना करें इसको, चैट को, राइट। मुझे पता है आपको लिंक्डइन लिंक भेजना है, प्रीति जी कोई कनेक्ट नहीं होगा आपके लिंक्डइन लिंक पे यहाँ पे भेजने से, राइट। स्पैम मत करो प्लीज, राइट। डाउट्स लेते हैं तो विथ लेट्स मेक द सेशन मोर इंटरेक्टिव, राइट। अब डाउट्स लेते हैं थोड़े बहुत, देन आई विल मूव टू द लास्ट पार्ट, राइट, व्हिच इज देयर। मेरे को और दो तीन चीजें बतानी है ऐसे कैंपस के रिलेटेड, राइट। लेट मी जस्ट ऑल्सो कवर दिस आउट, ओके, लेट मी जस्ट ऑल्सो कवर दैट आउट, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन चीजें बतानी है आपको कैंपस के रिलेटेड, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। सर कैंपस में डू वी नीड टू अपलोड आवर रेज्यूमे, द आंसर इज यस, कैंपस में आपको आपका रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, ओके। नाउ 18th को जो सेशन होगा उसमें आई टीच यू हाउ यू गोना बी फिलिंग आउट योर कैंपस फॉर्म। यहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, राइट। अब मैं बता दूंगा कैसे फिल करना होता है, राइट। बट अभी तक के अगर आपको थोड़ा सा एक्साइटेड हो और आपको देखना है कैसे करना है, तो कैन क्लिक ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्टूडेंट। वंस यू गो हियर, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। यू नीड टू रजिस्टर हियर, यू नीड टू पुट योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर ऑफ अ लास्ट एग्जाम,
Repeat. Roll number of a last exam. जो भी roll number था last exam का, you need to put it out. Student registration number. I hope you know, remember your registration number. CRO, WRO, NRO. Right? You need to put your SRO. Then email ID. Please, हाथ जोड़ के विनती है भैया, email ID 100 बार चेक करना. Once you put a wrong email ID, पागल हो जाओगे. Right? You'll never get an email. Please put your email ID correctly. Alternate email ID, password, confirm. ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको फिल करना है. अच्छा, ध्यान से सुनेंगे. इसमें यू माइट गेट अ एरर हियर. एरर क्या आ सकता है? यू माइट गेट एरर दैट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड और इनवैलिड रोल नंबर. हेलो, ये दो एरर आएंगे, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड और इनवैलिड रोल नंबर. तो क्या करना है? आई हैव टोल्ड यू वेयर यू आर सपोज टू ईमेल एंड फोन. ईमेल कर देना, उस पर स्क्रीनशॉट भेज के, एक दिन में ठीक हो जाएगा. भरोसा रखना आईसीआई पे. राइट? यू नीड टू ईमेल देम. अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल सर, मैं नवंबर का स्टूडेंट हूँ. आई क्लियर्ड माई एग्जाम इन नवंबर 23 एंड आई वांट टू सिट फॉर करेंट कैंपस. तो आपको फिल करना है प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन. राइट? कौन सा वाला? न्यू प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन. ये उन लोगों के लिए जो राइट क्लियर द कैंडिडेट्स नवंबर 23 के लिए. ठीक है? तो ये प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन उनके लिए जो क्या कहते हैं, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अ प्रीवियस अटेम्प्ट. ठीक है? तो दैट इज देयर. राइट? तो यू नीड टू फिल आउट फॉर, देखो क्लियरली लिखा है, प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन नवंबर 23 एग्जामिनेशन. कुछ नालायक लोग इसको जाके भर रहे हैं. नहीं भाई, ये नहीं भरना है. ये उन लोगों के लिए जो नवंबर वाले हैं. फिर से आ जाता हूँ, कैंपस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर हियर, यहाँ पे कर लो आप लोग रजिस्टर. ठीक है? डन. फॉर्म कैसे फिल करना है, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू आउट. राइट? इन सेपरेट सेशन. राइट? उसका और डिटेल सेशन रहेगा. ऑलमोस्ट इट विल गो फॉर सम आवर्स. राइट? तो अभी हम लोग उसको नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड अदर स्टफ. तो दैट इज देयर. बट नेक्स्ट टाइम हो जाओ, मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे पास किसी का लॉग इन हो गया तो. ठीक है? तो दैट इज देयर. यस, एक चीज हो गई. सेकंड थिंग एक और चीज बता देता हूँ. अगर आपको पास्ट का कुछ देखना होगा, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कुछ पास्ट का देखना होगा, इफ यू वांट टू सी व्हाट ऑल थिंग्स हैव हैपेंड इन पास्ट, व्हिच ऑल कंपनीज हैव कम इन पास्ट इन आईसीआई कैंपस, यहाँ पे दिख रहा है आर्काइव न्यूज. यू क्लिक हियर और यहाँ पे आप करोगे पंचायत. यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते रहना. यहाँ पे आपको दिखेगा May 24 का ब्रोशर. राइट? और सेकंड कैंपस का ब्रोशर. दिस इज कॉल्ड एज अ रोस्टर. आईसीआई कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती है ना, तो इस तरीके से आपका नाम और डिटेल आएगा. विच कैंपस, विच डेट, दिस इज कॉल्ड एज अ रोस्टर. ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे ना, तो आपको पूरे पुराने कैंपस के ब्रोशर्स, राइट, पुराने कंपनीज जो जो कैंपस में आई थी, यू विल गेट टू सी. राइट? सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है? लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग इन द, इस तरीके से आपको कंपनीज का भी लिस्ट मिलेगा. मेरे पास सब कुछ है. इफ यू नीड इट आउट, आई पुट इट आउट. तो इस तरीके से दिख जाएगा कि बैंगलोर कैंपस में एक्सेंचर आई थी. ये कब था? May 24 कैंपस फॉर एक्सपीरियंस सीए के लिए. करियर एसेंट है, ऐसा मत देखो तुम्हारा नहीं है भाई, ये करियर एसेंट है. तो एक्सपीरियंस सीए का ये सब कैंपस है. ठीक है? तो इस तरीके से लिस्ट आती है एवरी अटेम्प्ट. यू विल गेट दिस लिस्ट. राइट? एंड यू कैन देन अप्लाई. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन खोदनी होगी तो यहाँ से आप जाके खोद सकते हो. यू विल फाइंड आउट समथिंग ग्रेट हियर आल्सो. So that is first. Second, very important, right? अपकमिंग हमारे काफी सारे इवेंट्स है. इफ यू विश टू अटेंड, बैंग ऑन, यू कैन अटेंड इट आउट. जैसे आज क्रोल का प्री प्लेसमेंट टॉक था. कंपनीज आर कमिंग टू अस, राइट, एंड दे आर गोना बी आस्किंग दैट कि सर व्हाई डोंट यू कनेक्ट विथ योर स्टूडेंट्स आउट and help them get placed. So we have a lot of students, those who joined, I think around 700-800 students have joined. If you miss this out, it's gone. I cannot help you out. मैं सच में मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी. इसका रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं है देना. राइट? और डिटेल्स भी हम नहीं डाल सकते. अगर आप सेशन मिस कर रहे हो, ये आपका गलती है, मेरा गलती नहीं है. नेक्स्ट, ऑफ कैंपस में कैसे अप्लाई करना है? वी हैव अ सेशन टुमारो विच इज 18th ऑफ जुलाई को. हाउ टू फिल आउट अ कैंपस फॉर्म. आफ्टरनून को एक सेशन लेंगे छोटा सा, विच इज देयर. राइट? और आई माइट अपलोड अ वीडियो डायरेक्टली. मैं वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई मूड. 22nd को वी हैव अ प्री प्लेसमेंट टॉक फॉर अ विप्रो. यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन इन. राइट? बिकॉज वंस इट्स गॉन फॉर एवर. Then इसके साथ साथ I would be happy if you guys can start preparing for your interviews using AI bot also. This is the first AI bot we have introduced for chartered accountants. Right? Let me just show you a demo also for the people, those who have not tested it. Right? You can just go to the bot, AI bot, tools.cmong.com, and just start practice whichever domain you want to get into. You can select the domain, CA fresher or experience. Then you can select next. And the time you do it, the bot is start going to be asking you the questions related Hello, to that Shivam. domain. I am a chartered accountant recruiter specialized in statutory audit domain. Could you please tell me about your experience or knowledge in statutory audit? Okay.
So what this bot is doing, this bot is going to be helping you to prepare for interview. Hi, this is Shivam Palan, the founder of CA Monk. I've completed my articleship from EY Pune office, where I've mainly worked into automotive sector and real estate companies. Okay. CA Monk. After this is done, the bot is going to be grilling me based on whatever I'm going to be asking. Okay. Great to this hear is- about your background, Shivam. Let's start with a question related to statutory audit in the real estate sector. Can you explain to me the key audit considerations and specific risks that auditors need to consider when auditing a real estate company's financial statements? Right. So इस type के questions पूछे जाएंगे. And this is what we have built out for you guys. You can practice it any time during the day. इससे अच्छी चीज क्या चाहिए भाई? Right. I would request you to please practice it whenever you have a time in your life. It requires some coins, of course, but at the end it will also give you feedback. Okay. So you get 100 coins when you log in, free of cost, and you can try it out. Second, last update, right? Our next batch for interview preparation. The first batch तो fully हो गई है, right? उसमें तो registration ले ही नहीं रहे अभी हम. ठीक है, which is on 16th. आज पहला दिन था, full हो गया है batch, right? Next batch is starting on 18th of July. If you're serious for your interview preparation and if you want, we will help you out in everything which is needed to get into the best companies of the world. ये भी I think आज full हो ही जाएगा, मेरे को लग रहा है batch, right? So if you're interested, you can register for 61st batch starting from 18th of July. उसके बाद सीधा नेक्स्ट बैच आ रहा है 29th ऑफ जुलाई से, राइट? तो 10 दिन बाद बैच आएगा, राइट? बिकॉज 2 बैचेस पैरेलली रन हो रहे हैं. तो अगर आप चाहते हो एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर योर इंटरव्यूज एंड इफ यू आर सीरियस फॉर योर करियर, यू कैन जॉइन आवर 61st बैच. Everything needed to get into the best companies of world is covered here. If you want to know what all things are going to be covered here, you can watch the previous pre-kickoff session which is also uploaded on YouTube. YouTube पे pre-kickoff session uploaded है, वो आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, तो वहां से आप देख सकते हो. Similarly, if you're interested, you can also prepare for some domain-specific master classes which we have. Anyways, if you are part of a GR batch, you get one domain masterclass free of cost. Okay, so that is there. Next, right now, what I'll do, right? I think we have been taken and discussing for almost last 1 hour session, right? But I know there are a lot of doubts which you have, right? And I'll be happy to solve your doubts because it's important that you should not go with your doubts, right? So whatever doubts you have, right? I'll be start taking the doubts from YouTube. Then I'll move to Zoom. तो जिसको भी डाउट्स है गाइस, आप लोग फटाफट है ना YouTube पे डालेंगे, राइट? और YouTube की जनता आप भी डाउट्स डालिए, whatever doubts you have, right? Right, whatever doubts you have, right? You can just put it out in the chat. ठीक है? चलो, let's see, right? What all doubts you have. I do not have a link. बेटा अगर आपको क्रोल में अप्लाई करना है तो you need to fill out a Samba form, right? उसके थ्रू आपका application हो जाएगा. ठीक है? Then if I've applied for membership but confirmation is not yet till date, so don't worry, right? Nothing to worry about it, right? You will get it out. Sir, someone is asking what is a psychometric test which was written in the brochure. Psychometric test is the aptitude test which is there. Aptitude हो सकता है, technical test हो सकता है, version test हो सकता है. It can be basic GK test or it can be the basic psychology test. So multiple types of tests are going to be there. Sir, how to select interview dates? बेटा आप थोड़ी डेट सिलेक्ट करेंगे, कंपनीज डेट सिलेक्ट करेंगे, आपको उस डेट पे आना पड़ेगा. ठीक है, राइट? रजिस्टर करने में रेज्यूमे रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन पे रेज्यूमे, आईसीआई कैंपस में रेज्यूमे रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. ओके. कैन आई गेट अ मेंबरशिप विदाउट पासिंग एसपीएम? राइट, ट्राई कर लो. कुछ स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म फिल किया है. टिल व्हेन वी कैन फिल द संभव फॉर्म? जल्दी जॉब चाहिए तो जल्दी फिल कर लो, राइट? व्हिच इज देयर. अच्छा, someone is saying today I filled out a campus form and I paid a fees of 1500, राइट? लास्ट टाइम 500 था, इस बार का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बट अभी तक के तो मेरे हिसाब से 500 ही होना चाहिए. बट स्टिल आई एम नॉट 100% श्योर बिकॉज लास्ट टाइम 500 था. इस बार शायद फिजिकल कैंपस हो रहा है तो दे माइट हैव इंक्रीज टू 1500, हो सकता है. ठीक है, एक बार चेक कर लेना, राइट? व्हिच इज देयर. आई विल आल्सो इंश्योर दैट इट इज चेक्ड बाय टुमारो. तो दैट इज देयर. ठीक है. सर, आई एम नॉट अटेंडेड द एग्जाम, वेदर कंसिडर्ड एज अटेम्प्ट? अच्छा, अटेम्प्ट काउंटिंग पे मैं परसों सेशन आएगा, उस पे मैं डाल दूंगा. अटेम्प्ट गिनने जाते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट. If I miss any of the GR session, will I get the recording? The answer is yes. Can I apply for only small center? नहीं बेटा, दोनों सेंटर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, which is there. बिग के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल के लिए करना है नहीं करना है, वहां पे देयर इज अ ऑप्शन टू ड्रॉप डाउन. यू नीड टू सिलेक्ट इट आउट whether you go for a small campus or not. Sir, whether we
sir, whether we were shortlisted or not will be known on 5th of August, right? Which is there. Should be giving the consent on this date, and will we know whether नहीं तो जिस दिन इंटरव्यू होगा that day you'll be getting to know that whether you're selected or not. I've not done my graduation. Does it make a difference? The answer is no. Commitment charges, beta, if you selected in some company and signed the declaration, if you don't join that company, you need to give a 5,000 rupees to ICAI. Right? Sir, is it necessary that a candidate must have an articleship in that domain and companies are hiring? No, right? Not necessary, but recommended. You need to customize your CV, which is there. कौन से सेंटर में स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, इस पे विल हैव अ डिटेल गाइडेंस सेशन कि विच सेंटर यू शुड चूज, राइट? इस पे विल हैव अ डिटेल सेशन, डोंट वरी अबाउट इट. So do we need to sign a declaration for joining on a first day itself, right? Declaration तो आपको sign करना पड़ेगा when you fill out a form that you are in genuine need of a job. ठीक है. Can the profile be edited? Last time edit हो रहा था, but don't take this risk. एक बार भर दिया है तो फिर don't take a risk. What is Sambhav form, sir? Sambhav form is a CMONG placement program form, which is there, which you can just also find it in the description of a video, which you'll look into find there. See it. Sir, I'm not completed my advanced ITT. Can I still appear for campus? बेटा आपको register करना पड़ेगा. Date, last date दी गई है. I think 12th of August. उसके पहले you need to find out something, which is there. ठीक है. कब से है कैंपस प्लेसमेंट? राधिका, आप पुराना पूरा सेशन देखो, you'll get your answer. राइट? डाउट्स यूट्यूब पे डाले बिकॉज कॉमन डाउट्स ले रहे हैं, बिकॉज क्या दो जगह से डाउट्स हो नहीं पाएंगे गाइस, है ना? और यूट्यूब पे सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो वहीं से अपन लेते हैं. सर, हाउ मेनी डेज गिवन डिक्लेरेशन? ठीक है, वेयर आई कैन फाउंड संभव फॉर्म, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेना वीडियो के बाद, विल फाइंड आउट वेदर साइकोमेट्रिक एंड जीडी विल बी कंडक्टेड वर्चुअली. नहीं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, राइट? डिपेंड्स ऑन द कंपनी. अब लग रहा है वर्चुअली हो सकता है, राइट? बट यू विल गेट अपडेटेड बाय द कंपनी. नवंबर 23 स्टूडेंट्स को इक्वल प्रेफरेंस मिलेगी? द आंसर इज यस, कैंपस में इक्वल मिलेगा. डू वी नीड टू फाइल विच डोमेन वी विल नीड टू गेट अ जॉब? यस, ये कैंपस में फिल करना पड़ता है विच डोमेन यू वांट टू गेट अ जॉब, तो यू नीड टू फिल दैट आउट. अगर May 24 कैंपस के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के कैंपस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? द आंसर इज यस. Sir, I have registered for 61st batch CMONG. If I miss any of the session, can I attend it later? You will get a recording, which you can just watch it out. तो नवंबर 23 हो गया. एक ही बार डाउट डाले प्लीज, एक ही बार डाउट डाले. शुड आई वेट फॉर 18 सेशन और कैन आई फिल इट टुडे? मैं तो रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा वेट करो. व्हेन आई टेल यू आउट व्हेन टू फिल आउट अ फॉर्म, देन यू फिल इट. सर, इफ 2 इंटरव्यूज हैपेंड एट द सेम टाइम देन, अरे बेटा फिजिकल में है तो वो हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, अभी से इतना मत सोचो. ठीक है. कैन वी राइट अ कंपनीज नेम इन अ सीवी? यस, यू कैन राइट द कंपनीज नेम इन अ सीवी. कॉन्फिडेंशियल डेटा बस मत डालना. अच्छा, इसमें दो और चीजें होगी. 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स विल हैपन इन आईसीआई कैंपस. फर्स्ट इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन होगा कैंपस के पहले, वेर यू नीड टू अटेंड इट फिजिकली. यू आर गोना बी गोइंग टू द ओरिएंटेशन सेंटर एंड गोना बी हैविंग अ गाइडेंस फ्रॉम आईसीआई. दैट इज फर्स्ट. सेकंड, राइट, यू विल हैव अ मॉक इंटरव्यूज. राइट, अब मॉक इंटरव्यूज इस बार वर्चुअल होंगे या फिजिकल होंगे वो आइडिया नहीं आया है, बट दो चीजें होगी, एक ओरिएंटेशन सेशन एंड सेकंड इज अ मॉक इंटरव्यू. ठीक है. कुछ लोग की क्वेरीज आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट आउट गाइस. I would request you to please check, rewind the video and you'll get your answer. Sir, in case of banking industry, what domain to choose? बेटा बैंकिंग में एक बैंकिंग का मेरा ऑलरेडी सेशन डला हुआ है. बैंकिंग में क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ट्रेजरी, फाइनेंस, राइट, ये सब रोल रहते हैं. तो ये आपको देखना पड़ेगा इसमें से विच रोल यू आर इंटरेस्टेड फॉर. सर, कौन से सेंटर पे कौन सी कंपनी आएगी, वो सेंटर कैसे पता चलेगा? वो तो भैया आईसीआई ही बताएगा, मेरे को भी नहीं पता, राइट? एंड इट इज गोना बी अपडेटेड बाय कंपनीज. आई थिंक उनका लास्ट डेट जो है 30th of July, तब तक ही पता पड़ेगा, अभी तो पता नहीं पड़ेगा. व्हाट इज अवेल मॉक ऑप्शन? मॉक ऑप्शन मैंने वही बताया देव, राइट? यू नीड टू जस्ट सिलेक्ट, यू आपको मॉक इंटरव्यू देना है, किस टाइम स्लॉट में देना है. तो एक पैनल आएगा आपके सामने, मॉक इंटरव्यू लेगा एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस इट आउट. ठीक है. सर, व्हेन इज ओरिएंटेशन सेशन एंड मॉक इंटरव्यू सेशन? बेटा आ जाएगा डेट्स आईसीआई के साइड से, यू विल गेट अ मेल. ठीक है. आप हमारे May 24 सीए का कम्युनिटी जो है उस पर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज कनेक्ट इट आउट, राइट? डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है उसका, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी ऑफ द अपडेट व्हिच इज देयर.
एडवांस आईटीजी स्टार्ट्स ऑन 13th of August, व्हाट टू डू? हाँ तो ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया ना, तो चलेगा. व्हाट डू वी नीड टू मेंशन द कंपनीज वी हैव ऑडिटेड एंड रेफरेंसेस इन रेज्यूमे? नहीं समझा वर्षा. If any of the students have not completed articleship, did not get a preference. नहीं ना बेटा, you are eligible for campus. उसमें clearly written है, right? It is clearly written in the brochure saying that if your articleship is ending by 31st of October, you are eligible, right? Do we have to complete a form for a placement? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, right? तो मैं assume कर रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है? But still, I'll confirm with ICAI also. Next, if your form is pending, can you apply for campus? The answer is yes. So do companies offer off-site opportunities in campus? Off-site? क्या कहना चाह रहे हो भाई? Can you apply for a membership without completing an articleship? नालायक, ये कैसे पॉसिबल है? खुद भी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. Sir, my parents are looking for a life partner. Is it a right time? नालायक, जया जी, शर्म करो. अरे क्या डाउट चल रहा है? आईसीआई कैंपस का सेशन चल रहा है, तुमको शादी की पड़ी है यहाँ पे, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब के लिए अलग से सेशन लेंगे भाई. सर, व्हाट डेट? अरे Sir, I completed JIR earlier. Do I need to require to register again? एक बार आप टीम से कनेक्ट कर लो, सपोर्ट टीम will be happy to guide you out. I'm not working since February 24. Is it okay to wait for a campus? देखो, A और B whichever is earlier subject to higher salary. अगर ऑफ कैंपस कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है? एनी डिफरेंस बिटवीन ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस? अरे बेटा, ऑफ कैंपस मतलब क्या होता है? जो अभी लिंक्डइन पे चल रही है, नौकरी पे चल रही है, ये सब ऑफ कैंपस है. विप्रो ऑफ कैंपस, क्रोल ऑफ कैंपस, राइट? दिस इज ऑफ कैंपस. जो आपको लॉन्ग ट्री, लिंक्डइन, सीएमओंग और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे मिल रही है, ऑफ कैंपस वैकेंसी है, राइट? तो दैट इज देयर. सर, अगर फॉर्म क्लियर नहीं हुआ तो क्या कैंपस में बैठ सकते हैं भाई. अभी तक के तो कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया, बट बैठ सकते हो. एडवांस आईसीटी एग्जाम पेंडिंग है, कैन कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? विल नोटिस पीरियड भी एक्सेप्टेड इन इंटरव्यू? 1 month तक का नोटिस पीरियड ब्रोशर में लिखा हुआ है, तो 1 month तक का अगर नोटिस रहा तो एलिजिबल रहोगे. विच कैंपस शुड वी अप्लाई? आई एम हैविंग अ फिफ्थ अटेम्प्ट. राइट, डोंट वरी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे राजा 18th को, राइट? सर, विल देयर बी एनी लिस्ट गिवन बाय आईसीआई दैट विच कंपनीज आर रजिस्टर्ड फॉर अ डे प्रीमियम? ये आएगी हिमांशु, अभी नहीं आएगी बट लेट आएगी, राइट? बिकॉज द लास्ट डेट फॉर अ कंपनीज रजिस्ट्रेशन इज 30th of July, राइट? तो 30th जुलाई के आसपास लिस्ट आएगी, विच इज देयर. 30th या फर्स्ट को आएगी, विच इज देयर. आई डिड नॉट want to say about physical mode will get more benefits of this. That आप जो है वो accept करना पड़ेगा, right? Which is there. So I'm based out of Calcutta, and if I choose a Bangalore center, then will I have to move to Bangalore for a physical interview? हाँ जी हाँ, you need to move for a physical centers to Bangalore. ठीक है. Sir, I have cleared most of the companies hire CS with 3 attempts. नहीं बेटा, it's all about how you deliver your story. दीपिका जी, आपको स्टोरी बताते आने चाहिए अपनी अच्छे से, राइट? अगर आप ही अपने आप के बारे में ऐसा सोचोगे तो कंपनीज तो ऑफकोर्स सोचेगी ना, राइट? सर, नेक्स्ट 6 अटेम्प्ट्स हुए हैं, पहले 3 दिया है पर क्लियर नहीं हुए पर्सनल रीजन से. 3 आई वाज सीरियस एंड क्लियर्ड इन May 24. कितने अटेम्प्ट्स दिखाओ? नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव फिल्ड आउट आईसीआई फॉर्म इज काउंटेड एज अटेम्प्ट. खत्म. वेदर द ओरिएंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम टेंटेटिव डेट, बेटा आपको मेल पे आएगी, मेरे को भी आइडिया नहीं है. सर, विल शिपिंग कंपनीज कम इन कैंपस? आई डोंट नो, राइट? इफ आई हैव गॉट शॉर्टलिस्टेड ऑन 5th of July, देन आई गिव अ कंसेंट टिल 7th of July. इफ आई गेट शॉर्टलिस्टेड ऑन 5th of July, बेटा कौन से जन्म की बात कर रहे हो? आज 16 जुलाई है, तुम 5th जुलाई को कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे? अरे बेटा, क्या पूछ रहे हो? आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एंड हैव अप्लाइड फॉर GI 61 बट गॉट अ कॉल फ्रॉम Deloitte. शुड आई अटेंड द इंटरव्यू और वेट फॉर दिस? रिकमेंड है प्रिपेयर करके जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? बाप रे बाप, इनका डाउट्स चालू हो गए. आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एंड आई एम एलिजिबल फॉर कैंपस? यस, अगर आप पैरामीटर्स में बैठ रहे हो तो आप एलिजिबल हो. डू वी नीड टू सबमिट आवर रेज्यूमे बिफोर 24th of July? अरे हाँ भाई, कैंपस फॉर्म में यू नीड टू अपलोड योर रेज्यूमे, तो सबमिट तो करना ही पड़ेगा. लेटर ऑन कैन वी अपडेट आवर रेज्यूमे? द आंसर इज नो. सीवी में अटेम्प्ट मेंशन करना होता है? द आंसर इज नो. डू वी गेट अ CTC information on a shortlisting date? Yes, you will get entire details of a company with shortlisting details. सर, इंटर के अटेम्प्ट काउंट होते हैं क्या? कैंपस फॉर्म में भरना पड़ेगा इंटर के, फाउंडेशन के और फाइनल के अटेम्प्ट्स.
राइट। कोई कह रहा है जीआर वालों के लिए फिजिकल इंटरव्यू सेशन होगा क्या? राइट, तो वी आर प्लानिंग सम फिजिकल इंटरव्यू सेशन, राइट, बिफोर द कैंपस फॉर आवर स्टूडेंट्स। राइट, अब उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज हमने भी सोचा नहीं था, राइट, एंड दैट वाज नॉट इंक्लूडेड। तो डेफिनेटली एक फिजिकल सेशन हम प्लान कर रहे हैं, 2 days मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस और समथिंग सॉर्ट ऑफ। यू कैन गो एंड देन प्रैक्टिस इट आउट। कब होगा, कैसे होगा, जरूर बताएंगे आपको, बट हम प्लान करके रखें आपके लिए। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है बाद में रजिस्टर कर लेना, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, बेटा सपोर्ट नंबर सीएमओ टीम का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। Do we need to mention the companies audited during the articleship references in a resume? अरे यार, तुम कैंपस रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा है यार। सब अलग अलग डाउट्स पूछ रहे हैं। अलग डाउट सॉल्विंग सेशन में ले लूंगा इफ यू हैव डाउट्स, बट कैंपस रिलेटेड डाउट्स ओनली यार। ठीक है, so I think I've covered most of the things, but still if you have any more queries or any more doubts, right, I'll be happy to address it out. आपको एक छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं करना है, आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में जाना है इस वीडियो के, राइट, और वहां पे डाउट डाल देना। I'll ensure that the doubt is cleared. और अगर बहुत ही ज्यादा डाउट होंगे तो एक लाइव जूम सेशन ले लेंगे, where we'll ensure that all the doubts are cleared and whatever queries you have are going to be resolved. वैसे I'll ensure that I'll collate all the queries. आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपके जो भी डाउट्स है, राइट। I'll collate all those queries 18th का जब मैं वीडियो डालूंगा, राइट। I'll ensure that your queries are resolved. ठीक है, बिकॉज कुछ queries जो है वो काफी relevant लग रही है, कुछ queries already I have addressed it out, राइट, तो that is there. तो मैं काम करूंगा, जो भी क्वेरीज रहेंगे, थिंग्स रहेंगे, राइट, आई जस्ट इंश्योर दैट 18th को जो वीडियो आएगा उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ग्रेट गाइस, आई होप यू गॉट अ बेसिक क्लैरिटी रिगार्डिंग अ कैंपस। फॉर्म कैसे फिल करना है, 18th को डिटेल सेशन आ जाएगा, राइट। प्लीज वीडियो देख के वजह ही आप फिल करिएगा फॉर्म, सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी आउट। ठीक है, एंड गाइस रियली हैप्पी टू सी यू एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट द गाइस रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ, बिकॉज नाउ इज एरा वेर यू कैन प्रूव एंड डिसाइड दैट कि आपको कितने का पैकेज लगेगा। 10 का, 15 का, 20 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 11 का, 12 का, राइट। 1 लाख का भी पैकेज बढ़ गया थोड़ा सा प्रिपरेशन करने से, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा सीरियस होना है, राइट। अभी तक के तो आपने मेहनत की है, थोड़ी सी और कर लो। अब तो पैसे की बात है ना, अभी तक के तो डाउट था कि पैसा मिलेगा कि नहीं, अब तो क्लियर है ना, सीए बन के पैसा तो मिलेगा, इतना तो पता ही है, राइट। अब ये डिसाइड कर रहा है कितने का लेना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई से, राइट। तो बढ़िया से आप मेहनत करो, राइट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर सीरियस सीरियस हो तो ही आना भैया 18th का बैच में, राइट, देन यू कैन ज्वाइन एंड विल बी रियली हैप्पी टू सी इट आउट देयर। ठीक है, चलो, तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। 18th का सेशन रहेगा, वो आप देख लेना, राइट। कल एक सेशन है शायद इवनिंग में, विच इज रिलेटेड टू हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस। ठीक है, चलो, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, राइट। अगर कोई क्वेरीज रहेगा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, विल बी हैप्पी टू कवर इट। ठीक है, चलो, जूम की जन